લેરકા ગ્રામ પંચાયતના ન્યાય સમિતિના ચેરમેન પર હુમલો થયો છે। લેરકા ગામના મહિલા સરપંચના પતિએ હુમલો કર્યો હતો। વિકાસ કામોની રજૂઆત કરતા બબાલ થઈ હતી તો સમાધાન કર્યા બાદ કારમાં દિલીપ વાળાએ હુમલો કર્યો હતો। ન્યાય સમિતિ ચેરમેન શંકર સોલંકીને પગમાં ઈજા પણ પહોંચી છે। ઈજાગ્રસ્ત શંકર સોલંકીને હોસ્પિટલ ખસેડાયા છે। अनुसूचित जाति एसटी ना काम है भौतिक सुविधा आपे सरकार द्वारा पंचायत द्वारा तमने रजूआत करवा जो तो भाई वारंवार मैं रजूआत तमने हूँ करूँ छू तो रजूआत मारी ध्यान में नोंधे तमे केम नहीं लेता बराबर। तो मैं रजूआत करी तो ये लोगों ने गमतुं नथी जे मारो अधिकार मांगू छे सरपंचश्री ने पट्टीश्री ने गमतुं नथी के तमे तमारो अधिकार न मांगो तमे मने गमतुं नथी वस्तु मतलब साहब मैं ठराव कर दीधा बधु कर दीधा मारे इलेक्शन मीटिंग ना तो नहीं तमने मळे मैं तो शा माटे न मळे बस एनो गुणदोष राखी मैं 4 व्हील में आई अने आ वया गया पछी पाछे आवीने रस्तामां आगळ थोड़ा पंचायत ऑफिस ने आगळ जता ना मारी पर सीधा बेस मारी पर हुमलो करवामां आव्यो।